Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on crude oil. Crude oil price traded negative in today's trading session, closing by minus 1.50%. The price action shows downward trendline breakdown and lower high lower low formation, indicating short-term trend is bearish. Additionally, the close below 100-day exponential moving average confirmed weakness in the short-term trend. However, the immediate support is identified at ₹5,689 level. A break below 5,689 level could trigger further declines, with next target at ₹5,518 and ₹5,268 level in near term. The important resistance is identified at ₹5,750 level, that is 100-day exponential moving average. The negative crossover in MACD indicator reinforcing the bearish momentum expectation in upcoming trading session. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिरे एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है क्रूड ऑयल। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल का मूल्य माइनस 1.50% कम रहा। क्रूड ऑयल प्राइस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से पता लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है। इसके अलावा 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे रहने से अल्पकालिक रुझान में कमजोरी की पुष्टि होती है। हालांकि तत्काल सपोर्ट की पहचान 5689 रुपीस के स्तर पर की गई है। इसके नीचे के ब्रेक से आगे गिरावट आ सकती है, जिसका अगला लक्ष्य 5518 रुपीस और 5268 रुपीस है। महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की पहचान 5750 रुपीस पर की गई है, जो कि 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है। मैकडी इंडिकेटर में नेगेटिव क्रॉसओवर आगामी ट्रेडिंग सत्र में बेरिश गति की उम्मीद को मजबूत करता है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.